Good afternoon, everyone. Good afternoon, Principal Sir. Today we all are assembled here for a CBSE in-house training program. Today's topic is gamification in learning. And resource person name is SHRAMANA MULLICK. She will share personal views about this topic. If you are disconnected between meeting, please rejoin with same link. Now I will welcome to the SHRAMANA MULLICK resource person. Thank you, RSO, for this amazing scope. So today our topic is gamification in learning. Now, why gamification is important in learning system? And to understand that, at first we have to understand what is gamification. So as we can see in our slide that what is gamification? In 2002, the term gamification was officially coined, but prior to that experts vary on how much the concept was applied to engagement strategies. That's mean हम लोग ने gamification learning system में include तो किया गया था हम लोगों से, but कितना ये स्ट्रैटेजी को हम लोगों ने अप्लाई किए थे, दैट इज द मेन क्वेश्चन. Now, if we say that gamification term, so what is gamification? Gamification is the application of game design elements and game principles in non-game contexts. मतलब gamification ऐसा ही एक एप्लीकेशन है जिसमें हम गेम डिजाइन कर सकते हैं एंड उसका जो भी प्रिंसिपल है दैट इज कि हम लोग नॉन गेम कॉन्टेक्स्ट में कैसे गेम को इंक्लूड करें. The game can be digital, so in the form of an application or non-digital. ये gamification का जो भी गेम है वो डिजिटल फॉर्मेट पे भी हो सकता है, नॉन डिजिटल फॉर्मेट पे भी हो सकता है. When used during classes and included into curricular programs. Now, the main goals of the gamification are to enhance certain abilities, introduce objectives that give learning a purpose. यानी हमारे जो भी learning system है उसका
उसको एक पर्पस देना ही गेमिफिकेशन का मेन मोटो है। Engage students, optimize learning and support behavior change and socialize. इससे स्टूडेंट्स भी सोशलाइज होगा और उन लोगों का बिहेवियरल चेंज भी हम लोग नोटिस कर सकते हैं। नाउ गेमिफिकेशन टेंड्स टू अप्लाई टू सम फॉलोइंग नीड्स। दैट्स मीन हम कोई भी एप्लीकेशन अगर यूज करते हैं किसी भी लर्निंग सिस्टम में तो हम लोगों को कुछ चीज का जरूरत होता है। तो गेमिफिकेशन में भी अगर गेमिफिकेशन को भी अगर हम लोग यूज करें हमारे लर्निंग सिस्टम में तो we need something and that's our rewards. Number 2 is progress. Number 3 is competition. Number 4 is recognition and status. And number 5 is altruism. And last but not the least is fun. Let's come to our next slide that is about game and gamification. So game and gamification क्या है? जब भी हम लोग ये gamification term use करते हैं, the first word that comes in our mind is game. जब भी हम लोग ये gamification term use करेंगे, हम लोगों के दिमाग में एक ही word आता है that is based on game. But the thing is, gamification has some similarity to games, but they are not exactly the same. Now, gamification is not quite creating a game, but transferring some of the positive characteristics of a game to something that is not a game, thus gamifying. We can say gamification in this way, that is gamifying. अभी गेमिफिकेशन क्या है? ये प्रॉपरली गेम क्रिएट करने का कोई मतलब एप्लीकेशन नहीं है, पर गेम को हम लोग कैसे पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं वो हम लोग गेमिफिकेशन के थ्रू सीख पाएंगे। Those positive characteristics of a game are often loosely described as fun. हम लोग जिसको फन कहते हैं, that is the main positive characteristics which we are applying in our gamification, and they have the effect of engaging game players in the activity. The fun is gameplay is engineered by the 4 building blocks or defining characteristics of a game. मतलब कोई भी अगर हम लोग कुछ भी करें, किसी भी एप्लीकेशन को अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो वो कुछ चीज होता है जिसके ऊपर बेस्ड होता है। सेम एज गेमिफिकेशन 4 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। द फर्स्ट वन इज गोल रूल्स, सेकंड वन इज फीडबैक सिस्टम एंड थर्ड वन इज वॉलंटियरी पार्टिसिपेशन एंड फोर्थ वन इज डिफाइनिंग फोर्थ वन इज rules. Okay, now in gamification then building blocks more or less still appear but in a less pronounced manner. मतलब हम लोगों का जो ये जो गेमिफिकेशन है और ये गेमिफिकेशन का जो 4 ब्लॉक्स हम लोगों ने अभी जाना है, दैट इज गोल, रूल्स, फीडबैक सिस्टम एंड वॉलंटियरी पार्टिसिपेशन, ये हर एक गेमिफिकेशन में कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा हम लोगों को देखने को मिलता है। Now come to our next slide, that is the difference between gamification versus GBL. Now what is GBL? GBL is game-based learning. We can call game-based learning in short form, that is GBL. Now in gamification side, we can say the point is to motivate people to take some action and learn and do something. And on the other side, like in GBL, we can say the point is to motivate people to take some action and learn as an end result. मतलब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों का पॉइंट एक ही है कि पीपल्स को मोटिवेट करना और हम लोगों को कोई एक्शन लेना है, चाहे वो गेमिफिकेशन हो चाहे वो गेम बेस्ड लर्निंग हो। बट व्हाट इज द डिफरेंस? The difference is gamification में हम लोग लर्न करेंगे और उसी के थ्रू हम लोग सीखेंगे, और गेम बेस्ड लर्निंग में
यही होगा, लर्न करने के बाद, अप्लाई करने के बाद जो एंड रिजल्ट आएगा उससे हम लोग सीख पाएंगे. Now the second point is in gamification, usually game-like features are added to the LMS or any other system rather than the content. And in game-based learning, that is, content is usually modified to fit the story and scenes of the game. Third one, we can see that being intrinsically rewarding is optional. And in game-based learning, we can see that playing the game is intrinsically rewarding. In number 4, we can see that gamification is usually easier and cheaper. हम लोगों का जो gamification का application है या हम लोग learning system में जब gamification को apply करेंगे, that is easier and cheaper. वो बहुत easy way में हम लोग apply कर सकते हैं, वो बहुत cheap है. And GBL यानी game based learning में हम लोग देख सकते हैं, it is usually hard and expensive to build. Now come to the next, that is gamification is the tasks have points or some form of reward, and in GBL we can see that games have defined learning objectives. So these are the differences between gamification and game-based learning. Let's come to our next slide, that is importance of gamification in education. अब तक हम लोगों ने जान लिया कि gamification क्या है. अभी हम लोग इसको जब हमारे learning system में apply करेंगे तो क्यों करना है इसको apply, इसका importance क्या है. Let's see. Okay, as we can see in our slide that positive gamification experienced sorry for the interruption. Okay, so why it is important in our learning system? As we can see in our slide that positive gamification experience depends on these three things. The first one is authentic experience. Next one is class activities and designs. And the third one is gamification mechanics. So in authentic experience, we can divide it in two groups. The first one is real patient videos, and number two is prioritization activities, that is to reflect holistic patient management process. Next, class activities and designs, we can divide it in three groups. The first one is controversial discussion, that is based on to foster conflict resolution. And number two is peer demonstration, that is to foster reflection and socialization. Next one is instructor and peer feedback, that is to foster reflection and self-efficiency. Now number third is gamification mechanics, that we already told it. So we can divide it into three groups. First one is leaderboards, that is to enhance sense of success and self-efficacy during the experience. Number two is teammates, that is to foster social interaction or needs. जो भी हम लोगों का interaction होगा वो हम लोगों को team में करना है. And the third one is course,
that is used as a process to enhance self-efficiency. Now, in this thing, we can say suggested mapping of class designs and gamification mechanics that could enhance positive experience and motivation in gamified education. Let's come to our next slide, that is benefits of gamification in learning. अब तक हम लोगों ने जाना कि इम्पोर्टेंस क्या है लर्निंग सिस्टम में गेमिफिकेशन का. अभी अगर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे लर्निंग सिस्टम में तो हम लोगों को क्या सुविधा मिलेगा. फर्स्ट वन मेक्स लर्निंग फन एंड इंटरेक्टिव. इससे क्या होगा, अगर गेमिफिकेशन को हम लोग लर्निंग सिस्टम में अप्लाई करें तो हमारा जो लर्निंग सिस्टम है, जिस बच्चों के सामने ये बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है, तो वो बहुत फन और इंटरेक्टिव वे में होगा. नंबर 2 इज क्रिएट्स एन एडिक्शन टू लर्निंग. बच्चों के अंदर एक एडिक्शन होगा, उन लोगों के अंदर ये भूख होगा कि हम लोगों को पढ़ना है, जानना है. Number 3 is gives learners the opportunity to see real world application. बच्चे लोग सिर्फ बुक के थ्रू नहीं जानेंगे, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में वो लोग जान पाएंगे. Number 4 that is offers real time feedback. वो हम लोग जो भी एप्लीकेशन वहां पे अप्लाई करेंगे उसका फीडबैक उन लोगों को देना पड़ेगा. Gamification also enhances the learning experience. And number 6 is directly improves cognitive development. ये बच्चों लोगों का जो रीजनिंग पार्ट है, उन लोगों का जो थिंकिंग पार्ट है, जो उन लोगों को समझ के करना पड़ेगा, वो वाला पार्ट उन लोगों का बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा अगर हम लोगों ने गेमिफिकेशन लर्निंग सिस्टम में अप्लाई किया तो. Now next slide tells about that gamification in the classroom. अभी हम लोग gamification को कैसे हमारे क्लासरूम में अप्लाई करें. We can do it in 9 system. First one is rules. अगर हम लोग कुछ रूल्स बना दे कि गेमिफिकेशन में हम लोगों को ये करना है, ये नहीं करना है, क्लास में हम लोगों को ये करना है, ये नहीं करना है, so it will be very easy for us. नेक्स्ट वन इज गोल्स. हम लोगों का एक गोल रहेगा कि कोई भी अगर ये चीज अच्छे से करे तो उसको ये मिलेगा, वो इतना पॉइंट्स उसको मिलेगा. सो देयर मस्ट बी अ गोल. नेक्स्ट वन इज स्ट्रैटेजी. एक स्ट्रैटेजी होगा जिसके थ्रू गेमिफिकेशन अप्लाई किया जाएगा. नेक्स्ट फोर्थ वन इज अचीवमेंट. नंबर 5 इज मास्टरी. नंबर 6 is fun, that is more important. And number 7 is collaboration. Number 8 is progress. And last is appreciation. कुछ भी हो जाए, बच्चे लोग जो भी अप्लाई करे उन लोगों का जो भी मार्क्स आए, जो भी फीडबैक आए, उन लोगों को एप्रिशिएशन मिलना चाहिए, उन लोगों को एप्रिशिएट करना पड़ेगा. Let's come avoiding common pitfalls of gamification in education. मतलब gamification का जो भी common pitfalls होता है, जो common problems होता है education system में, अभी वो हम लोग discuss करते हैं. As we can see in our slide that first one is when used incorrectly, gamification in the classroom can make students motivated by rewards and disinterested in the learning process. Number B, we can see that to avoid this, it's important to understand the difference between intrinsic और extrinsic motivation. मतलब ये avoid करने के लिए हम लोगों को पहले ये समझना पड़ेगा कि क्या हम लोगों का intrinsic motivation है बच्चे लोगों के थ्रू और क्या extrinsic motivation है. Now, what is intrinsic and extrinsic motivation? Intrinsic means जो मोटिवेशन उन लोगों को खुद से आता है, उन लोगों के अंदर से आता है. एक्सट्रिंसिक इज कि हम लोग उन लोगों को जैसे मोटिवेट करते हैं, या तो कभी उन लोगों को पनिशमेंट देके, या तो अच्छे से उन लोगों को कुछ रिवार्ड्स मिलेगा, ये मिलेगा, ये सब बोलने से. Number C, we can see that intrinsic motivation happens when students enjoy learning for its own rewards. As I told you
दैट इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, वही जब स्टूडेंट्स को खुद से ये लर्निंग सिस्टम में एंजॉय आने लगता है कि रिवॉर्ड्स के लिए हम लोगों को ये करना पड़ेगा, तो अगर हम लोगों ने ये कर लिया तो हम लोगों को रिवॉर्ड्स मिलेगा, पॉइंट्स मिलेगा. That's the thing. And extrinsic, we can see it in number D, that is extrinsic motivation on the other hand occurs when students are motivated by external rewards or punishments. मतलब extrinsic motivation क्या होता है, जब हम लोग स्टूडेंट्स को कोई रिवॉर्ड्स उन लोगों को मिलेगा ऐसे दिखाते हैं, या उन लोगों को पनिशमेंट देते हैं कि कोई अगर पढ़ाई नहीं किया तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगा, तो उन लोगों को इसके लिए पढ़ाई करना पड़ता है. That's the all thing. Now we can see this, the positive effects of gamification occur more when teachers prioritize intrinsic motivation as they plan learning activities. मतलब स्टूडेंट लोगों को हम लोगों को ऐसे ही समझाना पड़ेगा कि उन लोगों को इंट्रिंसिक मोटिवेशन ज्यादा आए, वो खुद से जाके पढ़ाई करे. नेक्स्ट वन we can see in our slide, that is 5 gamification strategies. अगर हम लोगों ने अपने लर्निंग सिस्टम में गेमिफिकेशन को अप्लाई किया तो there must be some strategies and these strategies is divided in 5 groups. So क्या है देख लेते हैं. First one is instead of class worksheets, assign students quests to learn about the new subject or complete a project. हमेशा हम लोगों को वर्कशीट्स देना जरूरी नहीं है, हम लोग ये कर सकते हैं कि उन लोगों को कोई प्रोजेक्ट दिया जाए उसी चीज के ऊपर, तो वो लोग उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे. नंबर 2 इज यूज टीम बिल्डिंग गेम्स लाइक जियोपर्डी टू स्टडी एज अ क्लास बिफोर अ टेस्ट. कोई भी टेस्ट होने से पहले हम लोगों को ये करना है कि उन लोगों को एक ग्रुप स्टडी में देना है, जिसमें वो लोग टीम बिल्ड करके पढ़ सकते हैं. Number 3 is instead of class parties or treats, have students earn points towards a class field trip by behaving and doing their assignments. अगर जब हम लोगों का एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना बच्चे लोगों को कि आज आप लोगों का छुट्टी है, यू कैन डू वॉट एवर यू विश. सो ऐसे ट्रीट्स या ऐसे पार्टीज उन लोगों को थ्रो ना करके हम लोगों को ये करना चाहिए कि उन लोगों को हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि कोई फील्ड ट्रिप पे ले जा सकते हैं, जिसमें उन लोगों का बिहेवियर्स के ऊपर या वो लोग क्या कर रहे हैं वहां पे, इसके ऊपर उन लोगों को पॉइंट्स मिलेगा. इसमें ये हो सकता है कि वो लोग फील्ड ट्रिप में भी इंटरेस्टेड होंगे, पढ़ाई से थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो उन लोगों को भी अच्छा लगेगा और एक चेंज भी उन लोगों के अंदर आएगा. Now number 4 is pair subjects that a student struggles with or dislikes with fun books or activities to encourage motivation. हर कोई सब्जेक्ट हर कोई स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोगों को ऐसे स्ट्रेटेजी बना के गेमिफिकेशन को अप्लाई करना है, जो सब्जेक्ट बच्चे लोगों को अच्छा नहीं भी लगता है उसमें भी वो लोग इंटरेस्ट ढूंढ ले फन के थ्रू. Number 5 is talk with them together or individually about what motivates them as a student and incorporate it into the student engagement strategies. उन लोगों के साथ हम लोगों को बात करना पड़ेगा, चाहे वो एक साथ हो, सबके सामने हो या इंडिविजुअली हो. ऐसे बात करना है कि उन लोगों को वो लोग मोटिवेट हो जाए हम लोगों के थ्रू. So these will be the strategies of gamification. Now there are some examples of gamification that we can apply in our education. That is, first one is Kickstarter. So this is an American crowdfunding platform has launched a campaign on Cannibot, that is a robot toy that can be controlled remotely via a program and is used to teach children practical coding skills.
Sorry for the interruption. So as we were watching that game, If you were disconnected, then you rejoin. okay, so gamification examples in education is, first one is Kickstarter. As I told you before, that it is an American crowdfunding platform, has launched a campaign on Canibot, that is a robot toy that can be controlled remotely via a program and is used to teach children practical coding skills. Now the second one is Quizlet. It is a web or mobile application to study math, science, language, arts quicker via games and flashcards for free. It's used for half of the universities of the USA and is said to help with progress a lot. Now, next gamification example is Khan Academy, that is designs interactive video short lessons and supplies user with practice exercises and additional materials for creative learning of different subjects and their own pace. Number 4 is Duolingo. We can use it for language learning game with more than 8 million downloads on Google Play. The social app encourages to level app earning points and also get virtual currency and learn with friends. Now next one is Class Dozo. We can also use this as gamification. So it is an interactive, funny and practical solution that connects children with teachers and help create and manage better learning via virtual classes. It also shared the media and messaging. There are options for that. Next one is Kahoot. That is a solution to use at school and at work for e-learning. While playing, anyone feels more comfortable and confident in vocabulary quizzes, multiplication, geography, and more. So these are the examples of gamification. Now the agenda. What is the agenda of gamification? Number 1, what are 3 simple low-tech technicals for creating engaging learning experiences? Number 2 is what are 4 instructional design methods that encourage immersive learning? And number 3, how do I create learning experiences tied to interactivity, immersion, and game-based elements? Next is use what about gamification? We can tell it that use game-based mechanics, aesthetics, and game thinking to engage people, motivate action, and promote learning and solve problems. These are the goals of gamification. Now, in our next slide, we can see that what is this game stuff? Gamification is to learning games. हम लोग gamification को कैसे learn करेंगे? In these ways, the first one is part is to whole. Number 2 is piece is to puzzle. Number 3 is slice is to pie. And number 4 is steering wheel is to car.
Next thing is gamification uses parts of games, but it is not a game in and of itself. Now gamification of learning में हम लोग ये जान सकते हैं what is this game stuff. Gamification word में जो game का part आता है वो क्या है? First one is gamification is using game based mechanics, aesthetics and game thinking to engage people, motivate action, promote learning and solve problems. Another thing that is adding game elements to traditional learning. First point is that is structural and next is content. So in structural, we can say this: points, badges and leaderboard. And in contents we can say that characters, challenge and feedback. Some people think gamification is only about points, badges and rewards. The possibilities of gamification are far larger than points, badges and rewards. ऐसा नहीं है कि gamification सिर्फ पॉइंट्स, बैजेस और रिवॉर्ड्स के थ्रू ही जाना जा सकता है. इससे भी ज्यादा कुछ है that we can say in gamification. There are two examples of the concepts of game and gamification. First one that we can see in our slide, please have a look. And next one is Malone's theory is of intrinsically motivating instruction that is based on challenge, fantasy and curiosity. Next is fantasy. There are both cognitive and emotional reasons for evoking fantasy. Cognitively, a fantasy can help a learner apply old knowledge to understand new things and help them remember the content. Emotionally, a person can connect with the experiences and not bring with it real world concerns or fears. मतलब fantasy में जो भी है that is not only based on cognitive or emotional reasons, इससे बढ़ के भी हम लोग यहाँ पे जान सकते हैं that is on emotionally a person can connect with this experience and not bring with it real world concerns. We can see in our slide that curiosity, that is game environments can evoke curiosity by providing an optimal level of informational complexity and a novel and exciting game space. Next one, we can see that cognitive curiosity is also evoked by making learners believe their knowledge structures and are also inconsistent or incomplete. Challenge and consolidation. Okay. टाइम खत्म होने के लिए अगर आप लोग प्लीज यहाँ पे लिंक अगर आप लोग ज्वाइन नहीं हो पाए तो प्लीज सेम लिंक पे क्लिक कीजिए और ज्वाइन हो जाना. Now our next slide is on do you have a favorite game? अगर हम लोगों का कोई favorite game है, that is take a minute to think of your favorite game. पहले सोच लेते हैं and write it down in your chat window. जो भी आप लोगों का favorite game है, please write it in your chat window. Okay, sir. Your favorite game is cricket. Anyone else?